चक्षुरुन्मिलितं श्रीगुरवे वन्दे श्रीरूपां व्रजारसरसिकं नारायणं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमानुप्रस्थाय भूतले रूपानुगव्यं सत्यसमूर्ति नारायणं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुति गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my Sastamyananda pranams unto the lotus feet of our most worshipful Srila Gurudev, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Srishmad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Sri Guru Maharaj, Garupada Guru Varga, and all
assembled Vaishnavas and Vaishnavas. So today we are observing Hira Panchami, also the disappearance day of Sri Bhakteshwar Pandit. Yeah, this month of Ashar, this month Bhakteshwar Pandit, he appeared and also disappeared, both in this month. And we know we can make some conclusion that he is very prominent associate of Mahaprabhu, especially kirtan and dancer in kirtans of Mahaprabhu, and so like very prominent activity in Mahaprabhu is this Rath Yatra. So on this month of Ashar, this festival of Rath Yatra comes. So he himself has come on this month on Panchami, and also now here at Panchami. This is actually Shasti, so he disappeared on Shasti, but it's the 5th day since Jagannath left the temple, so that's why he's here Panchami. So we heard his glories already a few days before during his appearance day. So we know that he can dance for 72 hours. No one has that fame like Mahaprabhu associates. Also, we know how because of him that Devananda Pandit was forgiven by Mahaprabhu. So his disciple Gopal Guru Goswami, he has his disciple Ranachandra Goswami. He himself has said that he is manifestation of Tungavidya Sakhi. So anyhow, we know his eternal associate of Mahaprabhu in all the pastimes of Mahaprabhu. In his kirtan, he's very prominent. Mahaprabhu himself telling that you are like my wing, and if there's another one more like you, then I can fly. So today also Hira Panchami, one very deep like festival, because if you read in Chaitanya Charitamrita, this whole chapter where the Hira Panchami was described is entitled Performing Vrindavan Pastimes. So actually in many leelas of Mahaprabhu is not very much like labeled of performance of Vrindavan pastimes. Even Mahaprabhu went to Vrindavan, when he was there, he was so much in separation, never have this like this celebration that he's meeting with Krishna and telling that he's performing Vrindavan pastimes. He was there in so much separation. But here in this particular pastime, when Lord Jagannath reached Gundicha, and then Mahaprabhu now with his devotees staying there for 8 days and relishing now, Jagannath is with us. And he said, this time he is performing Vrindavan pastimes. So then one very special event, and today, this is Hira Panchami. Hira means to search. So on this day, they're searching. Who was searching? Lakshmi. So he said on this day, and there's a whole like festival on this, that Lakshmi comes out of Jagannath temple, and first in Singhadwar, in the main entrance of Jagannath temple, then he would call all the servants of Jagannath. He has all his servants, her servants with her, and they would catch all the servants of Jagannath and like punish them and like, chastise them so much, like they're thieves. And then she would go with her palanquin and all her like army of soldiers to Gundicha. And then there again, catching all the servants of Jagannath and calling them, and then bringing them and all these servants, tying down all these servants of Jagannath, the servants of Lakshmi, and bringing them to Lakshmi, and Lakshmi chastising them. Where is my husband? He's very foolish. Why he's leaving of my palace to come here?
like this, there's nothing here. And then the servants of Jagannath would offer obeisances. I would say, don't worry, tomorrow we will make sure your husband will return. And then she will be pacified. But before that, her servants would beat the chariot of Jagannath, and then they will return. So there's a whole this like festival. So during this time, Mahaprabhu, he wanted to witness this. And he was telling to Kasi Mishra also, like, I want to witness. And therefore Kasi Mishra, making it so that very opulent, like they're all nicely decorated, Lakshmi and all her servants. So, but during this time, then Mahaprabhu and Swarup Damodar had very important discussions, which make it so that whoever reads this chapter in Chaitanya Charitamrita, then they can appreciate so much, really, of like what is the purpose of Mahaprabhu, and what is the mood of Mahaprabhu when he is celebrating this Rath Yatra. So he asked Swarup Damodar, Jagannath, he came with his brother Balaram and Subhadra. They go to Gundicha. That represents Vrindavan. So it's like the whole year, Jagannath there in the temple, very merciful, very liberal. But at least once a year, he leaves the temple. So he leaves that place, which is symbolizing Dwarka, to go to this place, Sundarachal, representing Vrindavan. And so he said, why does Jagannath do that? And in doing that, why Lakshmi, he never bringing Lakshmi? So this is very important point now, like one of the first points of this discussion Mahaprabhu wanted to be discussed is that why in this Rath Yatra Lakshmi not coming? And therefore Swarup Damodar explained that Lakshmi is not qualified to enter Vrindavan and enjoy Rasa Leela with Krishna. So therefore in this particular discussion of Mahaprabhu, Swarup Damodar is making the point that when we talk about prem, there's prem in Vaikuntha also. But only the prem of Braj can really control Krishna. But specifically the prem of the gopis, and of course Srimati Radharani, only that really can control Krishna. So Lakshmi, he says, all these Dwarka queens, they are manifestations of Lakshmi. But there's 16,108. 8 are prominent. All these 8 queens of Dwarka, they cannot go to, they're not qualified to even go Vrindavan. What to speak of the 16,000 queens? They're Lakshmi. And so Mahaprabhu was asking why. And Swarup Damodar, he replied that unless Lakshmi takes shelter of the moods of the gopis, not only that, give up her Abhiman as Lakshmi, meaning she will have to take birth as a gopi from the womb of a gopa. Then later on, he will have to marry a gopa and have to meet secretly with Krishna, like a paramour, and do all the household chores of gopis. Forgetting all this Abhiman, she's a Brahmani. Only in that way, she can really enter into Rasa Leela. We know, up to now, Lakshmi doing austerity in this Belban. But no matter how much austerity is doing, that will not make her qualified. So only when she's really taking shelter of the moods of the gopis. So in this way, Swarup Damodar was telling like that. One is Baladev, Subhadra, they came with Jagannath to Vrindavan. But even there, they're only staying with Nanda, Yashoda, and the Gopas and others. Swarup Damodar telling that as far as understanding all the ecstasy of Krishna and his very secret pastimes in the kunjas of Vrindavan,
Baladev and Subhadra, they cannot understand that. And they cannot also be there. But using them as pretext so that Lakshmi will, will trust him that okay, he's just going there for some walking, visiting garden like that, and later on will return. Then Lakshmi will allow Jagannath to go. But Jagannath not bringing Lakshmi. And so when Lakshmi found out that he's actually in Vrindavan, already many days have come, then she became angry. So after making the point that comparing the prem and which prem can really control Krishna, and the prem of the Brij-Vasis, and especially the prem of the Gopis, then and one thing is, Srila Gurudev was telling that even among the Brij-Vasis, only to the Gopis, Krishna told, Napariham nirabhadya samvidam. Sadhu Kritya vibhav yusakita. So it's like, I cannot repay your love. Only to the Gopis. And therefore, they are the only ones really who can partake like those very secret ecstasies of Krishna, those secret pastimes in the kunjas of Vrindavan. So it's because of that, Krishna is controlled by their love. So this Rathayatra, Jagannath coming and staying now with the Gopis, now enjoying with the Gopis in Vrindavan. So now Mahaprabhu asking why Lakshmi is angry. Then Swarup Damodar explains that this is natural. This is nature of a lover, that when she sees some neglect in the beloved, then she becomes angry. This is nature of man. So from that point, then there's a whole discussion about man, which is really a deep discussion about the transformation of brain. From when there's in every jiva, there's sthayi. There is the permanent emotion or permanent mood of love. And with that sthayi, when mixed with other ingredients, then they experience bhakti rasa. This is the experience of prem. This prem further intensifies in Braj into sneha, then pranay, then man. When we say sneha, is also there's two kinds of this affection. It's very intensified like prem. One is in the mood of, they call the Grita Sneha, like the mood that I am yours. These are the moods of the Chandravali. They are very submissive. And then there's the Madhu Sneha, like the moods of Radharani and her group, the left wing, where they have a mood that you are mine for Krishna. So accordingly to their Sneha, then this also intensifies and becomes more concentrated to the next stage of pranay, meaning there's this oneness, there's this feeling that my beloved and I are like one atma in two bodies, or like we are one. And then, of course, this man is manifest in jealous anger. Sometimes it even comes before pranay, Gurudev explains. But here, Mahaprabhu wanted to hear all these things from Swarup Damodar. This is actually a very deep subject matter. Arupa Goswami has explained all this. But in Chaitanya Charitamrita, you can read also about this. So this is all beyond my realization. But here we're given a glimpse that by the discussion of this, then we get some idea of what is the nature of that love in Braj, and how actually the Gopis, especially Radharani, is controlling Krishna with her man. Now, here when actually what happened, during the time when they're discussing, then this whole event happened when the servants of Lakshmi came and punished all the servants of Jagannath. So Swarup Damodar was telling like, oh, this is, look at this kind of man of Lakshmi.
is completely like the opposite of the nature of the man of the gopis. Because usually when you say like someone having man, they give up everything. Like they throw away their ornaments, and they dress like with neglect. They feel like depressed and they're scratching the ground like this, And like they're renouncing like everything. And then the beloved have to come and pacify. But look what happened to Lakshmi. With her man, then she's taking shelter of all her opulence, all her wealth, putting all her like her opulence, all ornaments, and calling all her army and going to attack Jagannath. So and like Swarup Damodar was laughing, like look at what kind of like man is this? And look, is this powerful enough? Is it able to control Jagannath? No, even Jagannath did not appear to Lakshmi. Only the servants was there. And the servants that promised, okay, tomorrow Jagannath will come, but not even the next day Jagannath come also. So even with all her opulence, Jagannath not controlled. But in the discussion of Swarup Damodar discussing how Radharani with all her like ornaments, her ornaments are not all this, diamond like earrings and all these ornaments. Her ornaments are all this Ashesha Baba, Hava, Hira. We're seeing this Vipakataksha Stavaraj, where he said like by all her gestures, with even her like mild smile, that Krishna experiencing this like ocean of happiness and completely controlled by her, like this. So he said that when Radharani in man, then completely Krishna becomes like controlled by Radharani. So actually Mahaprabhu was very happy with the discussion with Swarup Damodar. It's a like very deep discussion. Then what happened? Then there's Srivas Pandit. We know Srivas Pandit. Mahaprabhu himself telling him like, now you are like Narad Muni, because Narad Muni always making controversy. That time Srivas Pandit, look how great my Lakshmi, like so much opulence. Like your gopis, they're just only milking cows and you look in Vrindavan, what wealth do you have? Only flowers and twigs and you have cows. You're only having this livelihood, making cows, making ghee, butter, and all these things. Then this give opportunity to Swarup Damodar explaining the real opulence of Vrindavan. So Swarup Damodar actually said, Vrindavane, he said, Vrindavane Sahajika, Ye Sampat Sindhu. He said, Sahajika means natural. The Sampat means opulence. Vrindavane Sahajika, Ye Sampat Sindhu. The opulence of Vrindavan is naturally, or the opulence of Vrindavan is very natural. It is like an ocean. And then he said, Dwarka Vaikunta Sampat Tara Ekabindu. And the Sampat, or the opulence of Dwarka and Vaikunta is only just a drop of that ocean, of that opulence of Vrindavan. So then we say, like, oh, in Vrindavan there's not like in Dwarka. In Dwarka we have all this gold and all this like precious jewels and like that. But Swarup Damodar explaining like what is explained in Brahma Samhita. There's a whole discussion again in Chaitanya Charitamrita about this, but it's all based on that verse in Brahma Samhita, which we sing last when we sing Brahma Samhita. Shreya Kanta Kanta Parama Purusho Kalpataraho Druma Bhumi Chintamani Kanamaye Toya Mandiram. He said, Shreya Kanta, this first Kanta is long egg, that's referring to the gopis. Shreya Kanta, the beloved, they're all Lakshmis. They're all very, very beautiful. Shreya Kanta, Kanta Parama Purusho. The second Kanta is male. So that's referring to Krishna. Parama Purusho, the supreme person, the enjoyer. Because actually in this verse, it says this, Parama Chidanandam Jyoti
Paramatat Aswadam Apicha. He said Aswadam Apicha. In Goloka Vrindavan, in the spiritual world, actually there is one in that verse. It says that everywhere is perceived all these things. And what is that? Shreya Kanta, Kanta Paramapurusho, Kalpatarabo. Kalpatarabo meaning this wish fulfilling, like desire trees. Kalpatarabo, Luma. The trees there are wish fulfilling trees. Bhumi means the earth. Bhumi Chintamani Ganamaye. Oh, is composed of Chintamani. Toyam Amritam. Toyam is water. The water there is nectar, Amritam. Then it says Katha Ganam. Katha meaning their conversation or their speaking is singing songs. Katha Ganam Natyam Ganam. And their movements, their walking is dance. Katha Ganam Natyam Bangsi Priyasaki. And there Bangsi is the Priyasaki. And Gurudev explained how Bangsi is actually Priyasaki there. Because Priyasaki means most dear friend, most dear companion. Not just of Krishna, but for everyone. Why? Because Gurudev said, for one, because of the Bangsi making this very nice like wave sound wave, then the gopis, he's actually delivering the gopis the location of Krishna. So it's like he's the GPS. Now, because of them, then they can locate Krishna. And then she's attracting all these gopis to come to Krishna. So both to the gopis, then she's very dear friend. And to Krishna, of course, because Krishna wants to follow the gopis through this Bangsi, then she's Priyasaki. He said, Paramandam Chidanandam Jyoti. This actually transcendental like happiness, this Para Brahma now is there in person. So our Swarup Damodar explained all these things that in Vaikuntha all this opulence is there, but it doesn't mean in Vrindavan there's no opulence. Actually, the opulence in Vrindavan is like an ocean, more than in Vaikuntha and Dwarka. But the speciality in Vrindavan is that this opulence is covered by Madhurya. And so then from here, there's all this discussion about, and this is the purpose actually of all this discussion. Mahaprabhu will explain that Mahaprabhu wanted to teach or to show to the people in this world what is the difference of Vaikuntha and Vrindavan. What is the difference of the prem in Vaikuntha and the prem in Vrindavan. And how not possible, it will be like rasabas to mix them together. So sometimes, like Gurudev telling, like some people they would kind of question, like, why Krishna not return to Vrindavan? And Gurudev answered that because after killing Kamsa, if Krishna returned to Vrindavan, then Jarasandha would know that Krishna's parents and relatives are in Vrindavan. Vrindavan, there's no army, nothing there, very dangerous. So therefore Krishna tried to stay away from Vrindavan to save them from attacks of Jarasandha. But then people may protest also, but why can't Krishna just visit them once or like a few times, like very quickly? And Gurudev explained, it's like the love of the gopis, separation is like a very hot frying pan. You put little water in there, it actually, immediately boils and even makes it more hot. So Krishna knows it won't satisfy. So then the question now is like, in Mathura, in one night, Krishna was able to transfer them into Dwarka. Why can't Krishna also just make all these great baskets transferred to Dwarka, give them a place in Dwarka, they can live together there happily? But this is the thing. You cannot mix them. It will be like rasabas. Because now, if the gopis are, for one, Giriraj cannot be there. There's no Giriraj there, there's no Yamuna there in Dwarka. Also, when to the people there, who will they call Krishna's mother or father?
will he be Vasudev Nandan or Nanda Nandan? No. So also there in Dwarka Mathura, really mood of Krishna is Kshatriya. In Vrindavan, mood of Krishna is Gopa. So there's all this consideration of like moods. And Mahaprabhu wanted to teach to the people, like, oh, what's the difference? And appreciating of the superiority of Vrindavan. Like in Vrindavan, Krishna is there, even showing his opulence. Like even he is 7 days old, he killed Putana. Putana has the strength of like millions. She can, so much power, like thousands of elephants. She can control, but she cannot take away Krishna from her breast. That time when Krishna is sucking her life hair, and even when she showed her real swarup, like big demon, and Krishna killed him, none of the Vrishbasis even thought that, oh, Krishna is the like Parabrahma, the Parameshwar. Their love even more increased, and they're praying for Krishna, making sure that Krishna is okay. Their praying is so much covered with Madhurya, this opulence they don't see. Like Mother Yasoda. If Mother Yasoda have all this opulence, like mood, then she will never be able to discipline like bind Krishna on the grinding mortar, like and have this Damodar Ashtakam, like this pastime on Damodar Lila. So we know all these different pastimes. Mother Yasoda even see the universal form, but never she had this like mood of opulence. Like Arjuna when he saw the universal form of Krishna during the Kurukshetra. So, but in Dwarka, Krishna is there in his full opulence, like in Vaikuntha. There, he is known as the Purna Brahma. He is the Parameshwar. And so, Mahaprabhu is showing these two moods and showing like how sweet that land of Vrindavan. So that now this is the mood that Mahaprabhu is relishing in this Rath Yatra in Gundicha. So he's giving us like some idea. So actually, after all this explanation of Swarup Damodar, Mahaprabhu telling Swarup Damodar is like pure Brij-Basi. Swarup Damodar never had come to Braj, but Mahaprabhu is saying he is pure Brij-Basi. So after hearing that, Srivas Thakur even now became in the mood of Madhu Mangal. And Mahaprabhu, he said, became very happy with this whole discussion. And Swarup Damodar started singing, Mahaprabhu started dancing. It's actually very wonderful, and it's only now actually that I noticed this, that in that chapter, because this is labeled as performance of Vrindavan pastime, that time Mahaprabhu was dancing and Swarup Damodar singing. He said, already long time they were singing. There's these 4 kirtan groups. They were all very tired already. But Mahaprabhu's like absorption in the mood of Radharani was even doubled. And he said that Mahaprabhu in her absorption in the mood of Radha, like actually appeared like Radharani. She manifests like her form. And when Lord Nityananda saw this, then Lord Nityananda from afar, he offered obeisances. And although Lord Nityananda can also, because everyone was tired, although Lord Nityananda can also, like stop Mahaprabhu, okay, telling like, oh, enough. Lord Nityananda did not come near, and he stayed from far away. Did not like try to stop Mahaprabhu. But Swarup Damodar, he saw already everyone tired, and then he telling Mahaprabhu
like, oh, everyone already like tired, and therefore Mahaprabhu stopped, and then he went to the flower garden, and then later on Mahaprasad was served like this. So these things for 8 days Mahaprabhu enjoying this Vrindavan pastimes. These are some very deep like events in the pastimes of Mahaprabhu we're appreciating today. Manchakal Bhakti Paripasam Nirvisa Bhakti Nama Bhakti. Om Dhyanatimirandasya Dhyanam Chakshurunipam Tasmai Rove Yogachandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Mukhtaya Tapataram Neham Shri Guru Varam Shri Ruparam Shri Guru Charanam Vande Radhikaya Tadalaya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Ram Jai Rup Sanatan Bhakraganath Shri Jiva Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram. So first of all, I offer my Shashtanga Dandava Pranam to the Lotus feet of our spiritual masters. Jai Shri Bhaktivinoda Shri Jai Goswami Maharaj Shri Devi Jai Shri Bhaktivinoda Shri Ram Shri Jai Panagari for all the stars and Shri. So it's very auspicious to be as we've been hearing. It's day of Pancham. Also today many sannyasis came to our temple. We spoke Harikatha here. Bengali they spoke is also so pure. Very difficult to understand that Bengali also. Very Darshnik Bengali. This kind of Bengali is not spoken here so much anymore. It's called all of Bhaktisiddhanta. Then these sannyasis. Also, when I was there, I was appreciating that's how merciful like Vaishnavas are. Because they're like so patiently listening to us speak. Very patient. Because here I was sitting in the assembly in the afternoon, the Sanchalak, the MC, the sannyasi had a gong, not more than 10 minutes. And if you speak more than 10, and pong, 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 just banging continuously, you have to stop that. So the same thing happened with so many of our speakers today. Speaking 10 minutes, not more than that. Maximum 13, 14, maybe 15. But you see here, Vaishnavas very patiently, not just once, twice, but for so many years now, they're sitting very patiently listening, nothing whatsoever. And sometimes you see also, like I noticed, like sometimes if any other sannyasi starts playing on the gong also, then the Vaishnavas become very displeased as well. Still anyhow, like many devotees are there, and they're hoping to listen from the Vaishnava sitting in front of us. So we also have to try to keep it as sharp as possible. You see. So today is called Hera Panchami. So Hera means to look, to search. So Panchami, so Rathayatra took place on the Vidya. And Panchami took place on the 5th day. It's called Hera Panchami. So you see who is Lakshmi Devi? In the Jagannath Ashram itself, in the first verse, we hear that, like we heard yesterday, this Kalachit Kalindi Tatavakina Sangita Mudabhi Nari Vadana Swada Madhupa. Then it says Rama Shambhu Kamma Mara Ganeshachi Tapado Jagannath Swami. It is the Lotus feet are worshipped by Rama Devi herself. But who is Rama Devi? It is Srimati Radhika herself in one way. Because Devi Krishna Mai Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mai Sarva Sambho. So you see that she is the embodiment of all the Lakshmis, Srimati Radhika. And we see that there's this one line in the Bhagavatam in one commentary in the 10th canto called Kiritra Rama Architange.
So here the general meaning is Giritra Rama Archit Angrim. That Krishna's lotus feet is worshipped by Rama Devi, and Giritra means Lord Shiva himself, Shiv Thakur. Giritra Rama Archit Angrim. But Shri Vishnu Chandra Thakur, he says that here Giritra Rama Archit Angrim means Krishna himself who delivered this Giri. Tra means Tran Karna. So Giritra means he who delivered Giriraj Govardhan. And Giritra Rama Archit Angrim. And here Rama means Srimati Radhika herself. So who is that Krishna who is being worshipped by Srimati Radhika in Giriraj Govardhan, in the caves of Giriraj Govardhan? This is the meaning of this line. So this way, in all the Shastras, whenever we hear of this word Rama, then we must know that Lakshmi Devi has no separate existence. Her existence is entirely dependent on that of Srimati Radhika. This cannot be denied. And if you see, like we've been hearing yesterday also, this Jagannath, ultimately, if you look at the three histories of Jagannath, in the first history, Jagannath, he appeared as Daru Brahma, there in Jagannath Puri. In the second history, Krishna appeared as Jagannath in Dwaraka, when Baladev, Krishna and Subhadra were hearing from Mother Rohini. In the third history, if you see, the most confidential history, Krishna appeared as Jagannath in Braj, not even in Jagannath Puri or Dwaraka, actually in Braj. Because when Srimati Radhika was lying on that bed of lotus petals, at that time when Krishna heard Srimati Radhika speak, at that time even Abhimanyu came to Srimati Radhika and he told Radhika that kindly forgive me, that I've doubted you in any way. Now I've heard from Yogamaya that you are the Swarup Shakti of Krishna, that you are no ordinary lady, you are a goddess herself. And then Jatila and Kutila also came, and they were speaking to Srimati Radhika. And Jatila and Kutila said, "Oh, Radharani, we should have realized how great you were when we had that test. When Krishna had the headache, and we had to carry this pot with 1,000 holes, then immediately when I carried this pot, all the water seeped out of the holes. But then when you carried this pot, not one single drop of water came out of the pot. So we should have realized our mistake then, we should have realized who you were then. But now we're realizing who you are. That you are Radhini Shakti herself." And then Chandravali herself came there. And then Chandravali, what did she say? That actually I know what is my position. I am your Kaya Viva. I have no separate existence without you. So now I'm realizing that I am like your maidservant. Even Chandravali admitted how her prema was not as exalted as Srimati Radhika's. So in this way, when Krishna heard all these Brajavasis speak in this way to Srimati Radhika, and Radharani herself speak, and then when Lalita herself was whispering the names of Radharani, of Krishna into Radharani's ears, then Krishna, he appeared as Jagannath. Where? There, near Uddhavkar, in Brajamandal. So how can we say that this form of Jagannath is like only Dwarka Beach? It's actually Brajendrandan Shamsundar. If you look at the third most confidential history, you see where he appeared. He appeared in Braj, in that form. And then when Narada Rishi asked for his blessing, then Krishna said, "All right, I'll appear there in Nilachal as Jagannath, Baladev, Subhadra, my brother and sister as well." Because even Baladev and Subhadra, they also heard Srimati Radhika speak. And their hands and legs also melted. In fact, if Sudarshan would have not been there, then they would have melted completely. Only because of Sudarshan, at least their hands and legs were maintained to some extent in this way. And then we see even when they manifested that form as Jagannath, Baladev, Subhadra, it was where? It was in Nilachal. And what is Nilachal? Or Nilachal? It is the blue shawl of Srimati Radhika. So Krishna appeared as Jagannath, covering himself with the blue shawl of Srimati Radhika. He's taking shelter of this Neela Vasana. Ramali Shiromani, Vishabhanu Nandini, Neela Vasana Paridhani. He's always covered by this Neela Vasana. So therefore, how can we ever say that this Jagannath is different tattva from Rajendra and Shamsundar? He's the same tattva. And then we see on this stiti, we see that Lakshmi Devi, who is she? We hear this most famous verse in the Bhagavatam, that Kasyana Vavasana Deva Vitmahe Tavanvireno Sparshadhikara Yat Pancha Shri Lalana Acharat Vihaya Kamam Suchiram Thiruprapa. Then Lakshmi Devi herself, to attain that good dust of Krishna, is performing Bhakti in Bail 1. And she has taken shelter of Srimati Radhika actually. Because Bail 1 is called Sri Jiva. Here Sriji does not mean Lakshmi, it actually means Srimati Radhika. So Lakshmi has actually taken shelter of Srimati Radhika in one word.
So we cannot say that she has not received this birthday. Maybe she will in a future life. Maybe she will be born as a gopi or as one of Srimati Radhika's Sakhis and then she will achieve this prema. Like we see even other associates of Krishna also perform austerities. So we cannot judge as much as we should. So there is always chance for them as well in this way. And we hear this man. Lakshmi Devi is in man. And this man, if you see, Gopal Guru Goswami, when he speaks to Vijay Kumar, then he explains what this man is. He says that this man is of two kinds. Sahituk man and this Nihituk man. Sahituk and Ahituk. Sahituk means with cause and Ahituk means without cause. So we say that in this man, especially this Vipaksha Vaishishta is seen. This Vipaksha Vaishishta means the speciality of the Vipakshas. Like we see when Krishna gave his Parijat part to Rukmini, then Satyabhama, she saw that Rukmini was getting this position of being Krishna's chief queen. And she went into Man. So what is the difference between the Man of the queens of Dwarka and the Man of the Vajadevis? There is a difference actually. If you see Satyabhama, when she goes into Man, it is Irsha Janit. Irsha Janit means this Man is arising out of envy, out of jealousy. Because she is saying that Krishna is giving the Parijat Lord to Rukmini and not me. But the Man exhibited by the Vajadevis is not of this kind. When Srimati Radhika goes into Man, is she envious of Chandravali? No. In fact, Srimati Radhika thinks that Chandravali cannot serve Krishna as how much I can serve. Because she has Krita Sneha, and I have Madhu Sneha. Chandravali, she does not exhibit this anger towards Krishna. Like sometimes if Krishna is late in meeting Chandravali, then Chandravali will tell Krishna, oh, you have come, now kindly sit here, now kindly relax for some time. And Subal lays next to Krishna. And he's telling Krishna, you just said Chandravali may be in Man, but actually she's very happy here. And then Krishna told Subal, no. Chandravali is actually in Man, but she's only exhibiting this Man in such a way, in a very soft way. So this way, Radharani is thinking that Chandravali, she's not angry with Krishna, that Krishna he cannot relish that way as much as he wants to. But when I exhibit my Man, which has this Mamyata, this contrary mood, then Krishna he can experience that way even more than even this Dakshini Bhav that Chandravali has, this submissive mood. So therefore I can please him more. So for this reason, Radharani experiences Man. Not like the other reason that this Man comes out of jealousy. She only wants to serve Krishna more and more. Like Vajadevi is also, like sometimes Shama Sati, when she's in Man, then she tells her other Manjaris, you remove all my ornaments. Then they say, why should we remove all your ornaments? Krishna is at fault, but why are these ornaments at fault? And she says, no, even these ornaments only remind me of him, of his arms. So his hands, legs, remove it immediately, and she throws everything away in this way. So this way, this Man of Braj is also very crooked and also very exalted. Most exalted, this Man. And we see that this Man also, like in that section, Gopala Guru Goswami, he says that this Man is seen in three ways. I just spoke about this some time back. It said that it's seen as Shruta. It's heard. Like sometimes any parrot comes inside the kunja of Srimati Radhika and she speaks about another Sati, that Krishna is with another Gopi from the Vipaksha side, Radharani goes into Man. It's Shruta. Or sometimes another Sati or Duti comes and tells Srimati Radhika and she goes into Man. It's Shruta. And then there's Anuman, Anumati, inference. This inference is seen by, like, sometimes if Krishna has been with Chandravali the previous night in the kunja and he comes to Srimati Radhika, and Srimati Radhika tells Krishna, oh, Neel Lohit Rudra. Neel Lohit Rudra means you have this bluish body, but there are many red signs on it, which show that you are with Chandravali the last night. So she addresses Krishna and says, Neel Lohit Rudra. This is called Bhoga. Means some signs of Bhoga are seen on Krishna's body. And then sometimes Krishna, by mistake, he recites Radharani's name, Chandravali's name, Radharani's name from Chandravali. And then Chandravali goes into Man. Say, where do you see Radharani's name? And sometimes even the Sakhas of Krishna recite Radharani's name, and Chandravali goes into Man. So this way, this Man of Braj is giving so much happiness to Krishna, more and more, more and more. And
And sometimes we see that this man is also seen directly, when the Sakis directly see Krishna enjoying with another Vipaksha gopi. So therefore, there are 7 ways to remove this man. One is by Sama. Sama means speaking very consoling words to Srimati Radhika. One is called Bheda. Sam Bhed. Bhed means speaking like some very pleasing words to Srimati Radhika. And one is called Nati. Krishna falls at the feet of Srimati Radhika. Kindly forgive me. Offer this flute at the feet of Srimati Radhika. And one is called Upeksha. Sometimes Krishna even neglects Srimati Radhika. He says, all right, if I cannot please you, then I'm leaving. And he leaves. In Lalita and Srimati Radhika, what is that? The Kunja. And there's no guarantee he'll come back to you or not. It's called Upeksha. And then there is this Dan. Sometimes Krishna gives some presentation. He can speak after like something he owns very nicely. And then Kriya. Kriya means Krishna makes a promise. Now I will never leave you and go anywhere else. He signs this document. And then finally there is Rasanta. Rasanta means sometimes Krishna he changes the mood there. And this Rasanta is also of 2 types. It is Swayam Gatit, that which happens on its own, and Buddhi Purvak. Buddhi Purvak means that Krishna himself enacts such a situation. Swayam Gatit means sometimes Bhadrasati, she is in Man. And when Krishna goes near her, Bhadrasati tells Krishna, go away from here, I don't want to see you. And immediately there's so much thunder coming in the sky. The clouds start rumbling. And immediately she goes and embraces Krishna. And the man is broken. This is called Swayam Gatit. And Buddhi Purvak means Krishna he places a garland on Srimati Radhika that he himself has made. Then purposely he places that garland and she is in Man. And Radharani takes that garland, throws it at Krishna. And then Krishna, when this garland is thrown at Krishna, then Krishna he starts pretending that he is in a lot of pain. This is called Buddhi Purvak. How to console this man. And this way we see that this man is also Durjay man, 3 types. Durjay man, which is called Praudaman. And then there's Mandaman, and there's Madhyaman. So Manda and Madhyaman can be easily pacified, but Durjayman cannot be easily pacified. So this way, Mahaprabhu actually, when he's having this discussion with Sarupa Damodar, Rupa Goswami, he's behind listening to this conversation. There are some who are actually seeing this drama that Lakshmi is doing, that she's beating all the associates of this Krishna who appear as Brajavasis. They are only seeing this drama. But there are some who are actually listening to the conversation between Mahaprabhu and Sarupa Damodar. They are not so much interested in seeing this drama, but are actually listening to this conversation. And who among them is foremost? Is Rupa Goswami. Rupa Goswami is listening to this conversation. He's right there. And whatever conversation he listened between Mahaprabhu and Sarupa Damodar, he wrote down in Ujjwal Leelamani. And that same essence of Ujjwal Leelamani, Bhaktivinoda Thakur, he wrote in Jayavardhana. And that same essence of what Bhaktivinoda Thakur we have to give, Gurudev is given there. These different kinds of man. And we see that even all these queens, the queens are represented by Lakshmi Devi. These queens themselves, they fell at the feet of Srimati Radhika. Like during Kurukshetra, we see that once Naradashi, he told Satyabhama that you have to give me as much gold as you can weigh Krishna. And then she gave all the gold she could find in Dwaraka, but still it could not equal Krishna's weight. And then she took shelter of Srimati Radhika's lotus feet. And Radharani knew, she took one tulsi leaf, she shed one tear and she gave it to Satyabhama. And when this tulsi leaf was placed, then the scale became balanced. Same as, in fact, even Krishna he went up and the tulsi leaf came down. So this way you see, even all the queens took shelter of Srimati Radhika. And Lakshmi Devi, she represents all those queens in this way. So we heard a lot of fatwa regarding this Aishwarya and Madhurya. And lastly, I'll just end with this. We see that there's so much Aishwarya even in Braj. In fact, this Aishwarya is not seen actually. Like Gurudev gives an example that if you're boiling milk and if there's a dry piece of straw, what will happen? It will appear to the top and it will sink to the bottom. So what is this dry piece of straw? It is Aishwarya. Like sometimes when Krishna lifts Giriraj, then they say, oh, Narayan appeared within Krishna and lifted Giriraj. Narayan appeared within him. Or Krishna, Nanda performed so many austerities, so all the demigods are helping Krishna. This is this Aishwarya Bhava in Braj. Like the example is given that if you take 100 sacks of sugar, and if you have 100 sacks of salt, and you have 10,000 sacks of sugar, although there is so much salt, still the sugar, the sweetness of the sugar will cover the bitterness of the salt.
They have like 10 million sacks of salt, and you have like 1 billion salt, like sacks of sugar, then how can it even be compared to the salt with sugar? Therefore, Krishna, although he is there in Muktata, although he is forgot himself, although there is also Sarvagita, he is also omniscient at all times. He is Bhagavan, he knows, but at the same time he is Mukta. So all these tattwas, Mahaprabhu and Saudama discussed, and Rupa Goswami stored in his heart, and he gave to us for our learning. And Shaka Krishna Premam Krishna Krishna Jai Rupa Sanatan Bharta Rupina Siti Rupa Tamatara Swaruna Echai Gosai Kuri Charana Bandhano Yave Ke Vidhana Savishta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Guru Sri Guru Maharaj ki Jai Guru Parampara ki Jai अनंत अनंत वैष्णव वृंद की जय समाधि गौरव वृंद की जय जय राम चरित्र की जय जय जगन्नाथ रथ राम सब की जय गौर प्रमानंदे हम लोग वैष्णव का निकट के पूरा रहस्य में विचारों को तो श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त है। किंतु महाप्रभु के पहले इन विचारों को कोई कीर्तन अगर श्रवण किया हो, शास्त्र में कोई वर्णन हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। महाप्रभु स्वयं आने के बाद महाप्रभु जी ने इन पंचमी का रहस्यमय विचारों को प्रकट करा। अभी क्या कहते हैं कि जब महाप्रभु 2000 के पहले से ही गुंडीचा मंदिर माध्यम तब से महाप्रभु आईकुटा में वृंदावन के कुंडों बागीचों में महाप्रभु घुमाए विराजमान हुए। हिंदू सरोवर में गुंडीचा मंदिर मार्जन के बाद समस्त भक्तों को लेकर स्नान करने जाते हैं, वहाँ तैरते हैं और जलगिरी करते हैं। जैसे ब्रज में कृष्ण स्वयं सखाओं के साथ खेलते थे सब कुंडों में, ऐसे ही जलगिरी वो भी साधारण नहीं। विष्णु बन गए, पानी के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर महाप्रभु बैठे हैं और वो पूरे सरोवर वितरण सरोवर है भ्रमण कर रहे हैं। नित्यानंद लोग कभी अपने ग्रुप के साथ शुरू हो गया मुंडो और क्या करते हैं नित्यानंद लोग ऐसे पानी लेकर आंखों में मारते हैं, वो जो आंखों से कुछ दिखता नहीं, सिर्फ नाक को गालियां देते हैं। और
डिनर शिवास पंडित करते हैं दूसरे के साथ, स्वर्गदामोदर के साथ, ऐसी कितने पार्टी और सब एक साथ में मिलकर जनों को पानी छिड़काव करते हैं। महाप्रभु स्वयं इन जनों से लग जाते हैं। जब उड़ीसा में पहुंचते हैं, ये सुंदराचल नाम है, किंतु ये जो अभिन्न वृंदावन है, ये महाप्रभु जी ने ही इन आचार्यों के साथ में उनको प्रकट करके सबके हृदय में मुक्ति कर दिया। महाप्रभु ने कहा आगे हृदय मन मोर मन वृंदावन मन बने एक्चुअली मन। दूसरे का हृदय कौन है? इसमें जंगल में जानवर रहते हैं, मेरा मन वृंदावन, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। दूसरे का हृदय हमारे हृदय में। तो महाप्रभु जहाँ जाते हैं वृंदावन का ही तो लीलाओं को प्रकट करके सबके हृदय में स्फूर्ति करता, ऐसा नहीं, वो वृंदावन की लीला के साथ युक्त करते हैं। एक प्रकाशमान प्रकट वृंदावन, एक अप्रकट वृंदावन और एक दृश्यमान। अभी वृंदावन होने से भी यदि हमारा सामर्थ्य नहीं दर्शन करने की, तो हम कौन सा दर्शन कर रहे थे और वो बकासुर कर रहे थे। जब तक पुतना को स्थान नहीं दिया तब तक पुतना वृंदावन में बाल खाते निर्जला सुना। जब उनको वृंदावन में प्रवेश स्थान दे दिया तो धात्मी जी को दिमागी सेवा प्राप्त कर। ऐसे प्रकट वृंदावन में आने से विश्वमान नहीं होगा। गुंडीचा में सुंदराचल में जाने से वृंदावन के विश्वमान साक्षात्कार विश्वमान को साक्षात्कार होना नहीं होगा। मैं बहुत बार बोला, गुरु जी के पास है, वैष्णव के पास है, धाम में है, किंतु उनका दर्शन नहीं होगा। क्या दिखेगा? नाचा। और क्या दिखेगा? उनके व्यवहार, कितना हमारे आदर करते हैं, पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, कितना हमारा गुणगान करते हैं, मेरे को प्रसन्न रखते हैं, किंतु वो विश्वमान नहीं प्रकट है, प्रकट प्रकाश है, विश्वमान नहीं। महाप्रभु ने क्या किया? प्रकट प्रकाश सुंदराचल को भी वृंदावन को दृश्यमान कर दिया, साक्षात्कार करा दिया। ऐसा नहीं होता तो महाप्रभु का आविर्भाव का कोई मूल्य नहीं समझते। जैसे लाखों करोड़ों लोग जो दर्शन आया करते थे महाप्रभु के निकट, महाप्रभु ने सबको लेकर के पुण्य मंदिर मार्जन करना, चेतो धर्म मार्जनम और उपयुक्त दावना देते, नहीं तो साक्षात्कार करने का दृश्यमान नहीं हो सकता। श्रद्धा ही नहीं उदित होगा। केवल झाड़ू देने से होने से नहीं कुछ होता। हृदय को तो झाड़ू देके परिष्कार करना, साफ करना सीखे, हृदय मार्जित तो हो, तो कुछ नहीं दिखेगा। कृपा करी मायाजाल उठाए जखन आंखें देखे सुविशाल चिन्मय भवन। जब तक माया का जाल नहीं हटाते हैं तो अपराकृत चिन्मय नहीं हो सकता। इसके लिए महाप्रभु ने क्या किया? लज्जा के एक दिन पहले तुम नीचे आ गए और मार्जन करके सर्व में जल के लिए आ गई वृंदावन लीला। और कोई बड़े बड़े नहीं है, सब किशोर हो गए। साथ साथ में बगीचे में आए, गंभीर नहीं आए। उस समय वाणीनाथ, गोपीनाथ, काशी मिश्र, साधु पंडित, कितने उपभोग अर्थात कितने प्रकार के नारंगी, छोला, चना, फल, फूल, कंदमूल जितने हो सकते हैं, खाजा गजा
सब लाके ढेर कर दिया। क्यों जगन्नाथ उस समय लक्ष्मी देवी नहीं बनाती कोई, और सब यहाँ बागीचे में महाप्रभु और कीर्तनिया परिश्रम जाने को रहा, सबको परमिशन करने महाप्रभु को बैठा गए और सब लोग परिश्रम नहीं किया। वो वृंदावन में से छोड़ के कभी घर नहीं आए, जगन्नाथ जी को लेने के लिए तो आए, पलवटी उद्यान में विश्राम किया, किंतु उसमें भी यदि वर्ष की कथा नहीं सुना तो महाप्रभु किसके साथ मिलते भी नहीं। जब वहां सुना महाराज प्रताप से, वो बेस भी बनाया ब्रज का, धोती पहन ली और एक ओढ़नी चादरा लगा दी, सब रात में उतार दिए, तब महाप्रभु जी मिले और मुझसे आलिंगन नहीं किया, वो प्रयत्न किया, पदभक्ति किया। ऐसे ही ये जो तेरा पंचमी है, इसके लिए गुरुवर्गों ने साक्षात गुंडिचा मंदिर में बैठ कर के, गुंडिचा मंदिर अंदर है, बाहर में बागान है बहुत बड़ा, आजकल तो ये सब कट गया, नष्ट कर दी, सब घर मकान बन गए। अब तो ठाकुर जी ने कृपा की तो अब सब उड़ गया है, फिर दोबारा ऐसे सुंदर बने। तो भगवान का साक्षात्कार महाप्रभु बदलने भूमि है, तो घर मकान बना करके कौन वो भी भोग करेगा, कब तक करेगा, नहीं कर सकते। आज का नहीं, आदि वृंदावन है, पूरा समुद्र तक कोई बस्ती नहीं, पूरा खाली सुंदर जंगल वन को बने, महाप्रभु वन में विचरण करते कीर्तन के साथ वन में। तो ये जो वृंदावनीय वार्ता, तो वृंदावन में रसों के लिए बांटता, जगदम्बिका कपड़े के समय लिखते हैं कि क्या ऐसा है, वृंदावन के रसों के लिए बांटता स्थान है। तो महाप्रभु ने क्या किया, वहां पर शब्दमकरानी, वकिष्ठ पंडित और गोपाल गुरु गोस्वामी, कितने लाखों करोड़ों आचार्य नित्यानंद समस्त भक्त वृंद वहां विराजमान, श्रीवास पंडित सब। तो जब तेरा पंचमी की बात आया, महाराज प्रताप ने पहले महाप्रभु से मिले थे पहले दिन, अब तो उनका हृदय ब्रजभाव में भ्रमित हो गया। ऐसे सुंदर सजाया गुंडिचा मंदिर, जिसका नाम बड़ श्रृंगार है, भगवान को ऐसे फूलों से कुंज सजाया, ढक दिया, लक्ष्मी ठहरती दर्शन करने आई, रानू गई। हमारे मंदिर में ऐसे तो सजावट कभी नहीं होता, सुगंध मधुकर भ्रमर, सुबह नहीं रात को गुंजन करने लगते, अब तक नाच गाने लगते। वो कितना देवदासी नृत्य कर रहे हैं, सारे देवदासी कौन है, द्वैता प्रिय और ब्रज के ईश्वरिया, वो लोग ऐसे सजे और सज करके लक्ष्मी आ रही है, उनको देख करके और ज्यादा नृत्य करने लगते और माला चंदन हाथ में लेकर के आ गए, उनको देख करके तो आग लग गया। तो ब्रज में आने से उल्लास होना चाहिए, उल्लास होती, उल्लास नहीं बल्कि ईर्ष्या ज्वाला पैदा हो गया। उन्होंने आदेश दिया, इनको पकड़ो बांधो, उन्होंने हमारे प्रियतम को काम छिपा दिया, हमारा नाम हमारे प्रियतम को किधर रख दिया, किंतु भाग न पाए। कहते हैं चिंतामणिमय राधा कुंड तक ताहे कुंज सत सत। अब कौन से कुंज में है, कैसे ढूंढेंगे भाई, किसकी हिम्मत है, वो तो राधा रानी की किंगरियां जानती है और किसी को पता नहीं है। यदि कोशिश भी कर ले उनके शरणागत नहीं होने से,
प्राप्त का खबर कोई नहीं दे सकता। कहाँ ढूंढेंगे? तो हेरती ढूंढती, इसके लिए बता रहे हेरा पंचमी। पांचवें दिन आई तीसरी, कहते हैं पहले उन्होंने ऐसा नहीं सोचो कि आज खुद चल के आई, इसके पहले भी जगन्नाथ के साथ अपने परिवार को भेज दिया। तो वो लोग भी देखा जगन्नाथ तो यहाँ पड़ा होंगे, तो उन्हें खबर दी। दूसरे दिन पहले संत लोग आए, संत रस वाले दास लोग आए, सखा लोग आए, वात्सल्य आए, कोई नहीं पा पाया, क्योंकि असह्य स्थिति में नहीं मोह प्रचो। जहाँ असह्य है तहाँ बदकारी दूसरा है। तो सबको उनके गौरवमयी सखा, गौरवमयी दास, गौरवमयी असह्यमयी सब आए, तो कोई नहीं, और खुद चल गए। किंतु आए तो कहाँ ढूंढेंगे? कौन सी कुंज में? जैसे अब हम बहादुरी की बात नहीं करते, राधे कुंज में कोई आ जाए, कहाँ कौन ब्रह्मचर्य है, महाराज है, ढूंढ के निकल लेंगे? किसको तो पता ही नहीं है किसका कहाँ कुंज, कौन सा कुंज है भाई। और घर बना हुआ है, कहाँ रह रहा है, कोई तो पता नहीं। मेरा मालिक कौन है? कोई मालिक नहीं। सुबह से रात तक कोई खबर ही नहीं। ऐसे रमे हुए हैं रमाबल हैं, तो उसको पता ही नहीं कौन है, क्या है, और कैसे हो रहा है, कैसे कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं। कल क्या हो उसको पता नहीं। आज तो कुछ हो गया तो कल क्या होगा वो भी मालूम नहीं। हो रहा है, चल रहा है। वो रश्मि आकर के सोचती है मेरा इतना बड़ा मंदिर और मैं मालिका नहीं हूँ, मैं आगे कोई तो मुझे स्वागत नहीं करा। सब अपने में नाच रहा है, श्रृंगार कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और हाथ पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, बाहें पकड़ लिया, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे सुंदर उल्लास। उस आनंद उल्लास को देख करके कहते हैं आप साबिल्य, आप सिंधु और भावानुकूल, आप सिद्धि, कितने सुंदर सुंदर वर्णन दिया। किंतु इनको यहाँ आकर के भाव वर्ण का रसम नाम जगत मंगल दस विषम, किंतु इनको नाम भी नहीं याद आ रहा है। क्यों? क्यों? जगन्नाथ जगन्नाथ करने से जगन्नाथ नहीं मिलेगा। जगन्नाथ के जो प्रियजन हैं उनके नाम का इतना जप करने से तब जगन्नाथ मिल सकते हैं, लेकिन उनको तो किसी से कोई मतलब नहीं। आज यदि गुरु के सेवक से प्रेम नहीं तो गुरु थोड़ी ना मिलेंगे। तो भगवान के प्रियों से यदि भगवान प्रेम नहीं तो भगवान का खोज कौन देगा? तो ढूंढती रही अपने सेवाओं को लेकर के, और कहीं रथ का कोना तोड़ दी, कहीं जाकर के चीख चिल्लाने लग गई, कहीं ढूंढती रही, कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि जगन्नाथ के सामने तक पहुंच गई, लेकिन देखिए जगन्नाथ कैसे हो सकते हैं? ये तो फूल से ढके हुए हैं सब, और भ्रमण गुंजार कर रहे हैं, देवदासियां नृत्य कर रहे हैं, कर रही है, और इतना सुंदर सुंदर पदों का कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है। महाप्रभु इसलिए बैठ गए समाज में, किसका बारे में? भाव समाज में। वृंदावन के दृश्यमान साक्षात वो चिंतामणि मान, केवल चिंतामणि मान नहीं, भक्त वर्णन दिया हमारे भक्त ठाकुर जी ने। इसलिए चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रबल विद्रुम माया कुंड कुंजा थोड़ा बड़ा। कहते हैं ये वृंदावन के निकुंज कुंजवन में सबका प्रवेश नहीं, और यदि कोई आ भी जाता है उनको आता पता नहीं, कोई संपर्क नहीं। तब हार गए, रोने पिटने लग गए, किंतु किसी ने उनको मदद नहीं की। क्यों?
ऐसे का ऐश्वर्य सिद्धि में नहीं मूल फिरतो तुम्हारा ऐश्वर्य तुम अपने पास है जन्म ऐश्वर्य सीवी श्वेत मद मानव कुमार वही उदापुर वैद्यम किंचन गोचरम जहाँ ऐश्वर्य श्री और मत पंडित धंधोर इसमें भगवान नहीं भगवान तो बोलते हैं किंचन गोचरम कोई इसकी तरह किंचन है तो उनकी लक्ष्मी देवी पार न पाए तो महाप्रभु जी कहते हैं लक्ष्मी देवी जी ने मान किया तो ऐसे श्रृंगार करके सबको दिखाने के लिए और सेनाएं लेकर के अपने सब कुछ करके आया उनको उसे मिलने के लिए उनको ढूंढने के लिए उनको ले जाने के लिए किंतु संभव नहीं क्या दिखा रहे हैं चाहे कितना साधन कर लो कितना वैभव प्राप्त कर लो अनिमा सिद्धि लघिमा जितने प्रकार से सिद्धि नवमी थी प्राप्त कर लो या लक्ष्मी देवी को जो कृपा प्राप्त कर लो किंतु वो वृंदावन के व्रत के एक पासन में भी नहीं प्रवेश कर सकते लोग सोचते हैं बाबा जी लोग बैठे हुए हैं करते कुछ नहीं है कि कैसे इतना उसको करते हैं कैसे मैनेजमेंट करते हैं कैसे करता है किंतु वो समझते नहीं ये कौन करने वाला है करने वाला तो श्रीमती गारणी कोई कर लोग करते हैं यहाँ तो रह रहे हैं उनसे क्या मतलब है क्योंकि उनको दिखता नहीं है कि सोचते हैं अपने देश से हम तो नहीं कर पाते ये कैसे करता है तो लक्ष्मी देवी सोचती है वह खुद करती है सब काम कराती है यहाँ सोचती है जवान कैसे प्रसन्न है इतना लोग कैसे प्रसन्न है नाच रहे गा रहे श्रृंगार कर रहे हैं सब फूलों से जैसे दक्षिण भारत जाएंगे ना तो देखेंगे शाम के समय सब लड़कियां औरतें फूल से सज करके माला पहन के सोना हीरा जल कपड़े सज करके सड़क में निकलेंगे घूमने जाएंगे हैं क्यों प्रसन्नता है दुखी नहीं छोटे छोटों का डर नहीं है किसी से कोई मतलब नहीं है उनको भगवान में विश्वास है भगवान रक्षक है और अपने मुंह मुड़ा करके अपने बालों को भी उतार देंगे प्रभु के चरणों में शरणागत डर नहीं है ऐसे ब्रज में कोई गोपियां किंकरियां कोई नहीं डरती सब ब्रज के बीचों में गलियों में कुंजों में वनों में जंगलों में विचरण करती है वहां से मधु संग्रह करती है सुंदर सुंदर कंदमूल फल फूल हैं सुंदर सुंदर लकड़ियां अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर रेशम के धागे सब निकाल तैयार करके कृष्ण के लिए कपड़ा बनाती है ऐसा मत समझना कि वो एक मिनट के लिए बैठी हुई है कि उनका प्रेम सेवा करती है प्रेम का साधन करती है किंतु अन्यत्र मालिका न करते हैं खुद सेवा नहीं करते ऐश्वर्य मार्ग में यही फर्क है वहां मालिक बन के आदेश निर्देश देके परिचारक मन की परिचालना करना चाहते हैं किंतु नहीं कर सकते कोई किसी के बंधन में आने वाला नहीं है और किसी के गुलाम और आड़ताली बनना नहीं है क्योंकि जीवों को स्वतंत्र बनाए ये स्वतंत्रता ही रत्न है ये प्रेम से प्रभु की सेवा के लिए कोई नियुक्त करे तो प्रभु उसी को स्वीकार करते हैं तो ब्रज में यह प्रेम सेवा है कुछ किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं है तो प्रभु की ये जो सेवा करते हैं महाप्रभु इन चीजों को रस से उपकरण करके समझाना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं इसे लक्ष्मी जी को बोलोगे देखो लक्ष्मी क्या मालिकाना और ब्रजदेवियों के स्वाभाविक रूप इससे दो बात आता है इससे सारसिक राग परमाविष्टता भवे तन्मय या भक्ति छात्र रागात्मक विद्या स्वाभाविक प्रीति नहीं होने से अनुराग नहीं आएगा एक मंत्रोपासना में ही एक सारसिक स्वाभाविक जो मंत्रोपासना है उसमें
वाद्य वर्ग आचमन आसन सब कुछ देखेंगे उनको साधन करते हैं। लेकिन उनका मन कहाँ है? अरे स्वाभाविक वृत्ति है, ना वाद्य है, ना वर्ग है, ना आसन है, ना आचमन है, ना घंटी है, ना खाली है गिलास है। सुंदर फल देखा, खाया चखा, हमें दिया है फल जरूर चखाना है। क्या स्वादिष्ट है, क्या सुगंध है। लेकिन वो आ भी गया है, आधा खाया हुआ लेकर छीन कर खाने लग गया। स्वाभाविक अनुराग है, जहां जहां नेत्र पड़े तहां स्पर्श करे। ये सर्वभूतेषु जो अवस्थित भगवत भावनात्मा है। साबर जंगम देखे ना देखे तार मुक्ति सर्वत्र स्फुरति स्थित स्वाभाविक है। अभी प्रभु के लिए स्वाभाविक वृत्ति यदि हो, कोई बाजार गया, अच्छा फल देखा, कोई फूल देखा, किसी एक समय उधर मठ में पार्टी के पहले सब आते हैं गुरुदेव के पास। वो प्रचारक आते हैं, वो शिष्य तो गुरुदेव के लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं। किसके जैसा होता है? कोई बादाम अखरोट शुगर फल, कोई कुछ भी ले आता है और ठाकुर जी के लिए लाते हैं। एक दिन मैं एक महाराज से पूछा, आप इसका प्रचार करते हैं तो आप ठाकुर जी के कुछ नहीं लाया? गुरु जी के लिए एक फूल माला तो ले आते कम से कम। बोल मैं आ गया, ये क्या कम है? हाँ नहीं, सब कुछ मैं तो गुरु जी को समर्पण कर दिया, भगवान को समर्पण कर दिया। बहुत अच्छी बात है, सब अपने को दे दिया तो आपका सब कुछ दे दो। नहीं, ये नहीं दे सकते। तो स्वाभाविक अनुराग होने से क्या करता? सब कुछ नहीं तो इतना सा तो भगवान के लिए ला सकता। प्रेम कहीं है और किसके लिए करता है? प्रभु के लिए, गुरु के लिए नहीं कर सकता। ये दिखावा, ये भजन नहीं है। माँ को इस मेरा पंचम में दिखा रहे हैं वृंदावन का वैभव और आपका अवसर लक्ष्मी का वैभव। वहां उनका बात कोई नहीं सुनता और दरिद्र लक्ष्मी कर देना चाहते हैं, बोल कर दो। वृंदावन में कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा दौलत की, सोने चांदी हीरा दौलत की। हम दौलत राम नहीं होना चाहते। वृंदावन के रथ में लुटपुट खाएंगे, गलियों में बितियों में, और लोग गाएंगे और उनके गुणगान सुनेंगे। हमें चाहिए नहीं, दौलत राम नहीं होना है। महाप्रभु इसको दिखा रहे हैं। जैसे एक तरफ सरदमदर जी, एक तरफ शिवास पंडित जी महाप्रभु व्रत की कथाओं को सुन रहे हैं, स्वाभाविक वृत्ति कैसा है। और एक तरफ लक्ष्मी की वैभव की बात सुन रहे हैं। उनके वैभव को बात हो तो लक्ष्मी सबको सब कुछ देती है, किंतु कौन लक्ष्मी के पीछे चलने वाला? पूजा करती है, करते क्यों? मुझे मिले कुछ, इसके बाद मिल गया, दौलत खराब हो गया, कुछ साथ रह गया। अब ये तो बढ़ना है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतना भी वृत्ति है प्रभु के लिए, अलग नहीं, अलग होना भी नहीं चाहते और ये भी पसंद नहीं। खाएंगे खिलाएंगे, खिला के खाएंगे, पहना के पहनेंगे, उनसे दूर नहीं, हम उनके ही बने रहेंगे। किंतु उनमें तो क्या है, वैभव लेकर के अलग हो गया। वो अलग है, मालिक अलग है। यहाँ ऐसा नहीं है। जो है हमारा सखा, हमारे मित्र का, इससे बताया अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गो जन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। और कोई परम मित्र नहीं बन सकता व्रत के अलावा। सब कुछ दे सकता, मित्र नहीं बन सकता। इससे बताया नंदस्तु किम अकुरुत ब्रह्मन् स्वयं महोदय यशोदा च महाभागा प्रपोजस्य स्तनम हरि। क्या कहा महाभागा? और किसी के लिए शब्द का व्यवहार हुआ आज तक? लड़का के लिए कोई कहेगा ये महाभागा है? किंतु इनके लिए कह रहे महाभागा कौन? यशोदा और रजदेवियां। इससे महाप्रभु
इन वैशिष्टों को तराजू में तोल करके दिखा रहे हैं। स्वरतांग आदि कीर्तन कर रहे हैं। शिवास पंडित कभी कभी उदाहरण देते हैं और उनको कैसे कथाओं को सुनाए, रस में डुबो दिया, वाले भाव में आविष्ट होकर नृत्य करने लगते, पगल बजाने लगते। मैं क्यों जाऊं लोग की तरफ? मैं नहीं जा रहा, मैं तो ये रस में रहूंगा। अद्वितीय प्रभु मुंह धोकर लोटपोट खा रहे हैं, भूल गए कि मैं अद्वितीय हूँ। नित्यानंद प्रभु क्या किया? वो आविष्ट हो गए आनंद मंदिर के भाव में। इससे जो आई टूटा वो उद्यान बगान है जहाँ पर महाप्रभु नवरात्रि वास कर और सब समय कीर्तन और व्रत की विधियाँ। इसे हम लोग पुरी में थे, रात को 12 बजे 1 बजे वो रात बड़ा सिंगर का रात को होता, कितना प्रसाद ला करके मान लोग ढूंढ करके ला करके रिक्शा में कुछ सर में ढोके ला करके करते रहते। हम क्या करेंगे? प्रसाद हम है कितने लोग? 100-150 करोड़ लाख 5-10 लोग क्या करेंगे? तो प्रतिज्ञा साबित देती है। इसे अन्यत्र देखो बहुत दूर है, टिकट लो, कूपन लो, पैसा दो, दरवाजा बंद है, कोई पूछेगा नहीं। ब्रज में ऐसे कोई रीति है? नंद भवन में ऐसा कोई बात है या दस्ता भवन में या कोई श्रीमती अग्रणी के पास ऐसा कब कोई सुनता है? इसलिए ब्रज की रीत उसमें है साबित से। ब्रज छोड़कर ये कोई कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए महाप्रभु इस पंचमी में गुंडिचा मंदिर मार्जन से लेके एक एक दिन, जिस दिन गुंडिचा मंदिर मार्जन हुआ उसके दूसरे दिन से ही महाप्रभु अड़ेल समस्त भंडार खोल करके महाप्रभु देना शुरू कर। इससे कैसे देते हैं? आलोकदान, बाची, आरती, या दर्शन देते हैं ऐसे नहीं, नेत्र से जिसको देखते हैं उसके अंदर रस प्रवेश करते हैं और हृदय से सोचते हैं उनके पास चला जाता है। बाची खुद बोलते हैं, बस शब्द ब्रह्म चला गया। और फिर महाप्रभु जो करुणा है इससे बहुत है। इन कथाओं को यदि गुरुवर्गों से सुनने का नहीं सौभाग्य हुआ होगा तो हम वंचित रह जाएंगे। महाप्रभु जी ने कृपा करके सब संचार करके सब भक्तों के अंदर वो लोग अपने वर्णन कर रहे थे। पृथ्वी देवी सब रसों को संचार करके फूलों में बोलो नहीं। ये देखो एक से फल है, आम भी है, जामुन भी है, संतरा भी है, अंगूर भी है। रस देखो पृथ्वी से लिया, ये तो कैसे स्वाद है, सुगंध है, अलग अलग है। हाँ, ऐसे महाप्रभु जी ने रस का संचार कर दिया। इसके बिना कोई बड़े रस को नहीं समझ सकता और ना साबित हो सकता। वो भाई हम लोग इसे ब्रज में ब्रज को रिवाज प्रकट हो गया, स्मरण कीर्तन करो। हमारे गोस्वामी जन ब्रज में रहते दिन रात महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण करते और जो महाप्रभु पास रहते तो सभी ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते। अब जब महाप्रभु के स्मरण करते देखते महाप्रभु की ब्रज लीला स्वाभाविक उद्दी बना हो रहा है। इसके आज हीरा पंचमी के बहुत विशिष्ट है। महाप्रभु के लिए क्या किया? प्रतापुत्र आदि जितने काशी मिश्र आदि आज इतना सुंदर श्रृंगार और इतना सुंदर राजभोग। और ये दिन कभी मैं पहुंच गया गुंडिचा मंदिर में, तो मैं एक दूसरे मेरे साथ रात को जाता, तो दिन में भक्तों में मेरे समय नहीं गया तो देखा भाई वो और मेरे को अंदर ले गए, छोड़ दिया अकेला, कोई नहीं है। मैं बोले ये जब मैंने किया भोग आया और उन्होंने घुसा दिया। मैं बोले ये क्या कैसे मान डालोगे? सब अंदर मैं अकेला, कोई नहीं, और वो भोग समर्पण कर रहा है। बाहर आया, ये इतना बड़ा मेरे का पत्थर घुसा दिया मंदिर के
चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, हजार हजार लोग एक कीर्तन चल रहा है, जबरदस्ती बैठा दिया। मैं थोड़ी ना कोई जोगी गोरी हूँ, मैं कितने सर प्रसाद दे सकता हूँ, इतना सारा ला दिया तो, और घी डाल दिया कितना सारा, कितनी मिठाई, कितनी सब्जी, पापड़ी, कैसे जगन्नाथ के भोग है। मैं बोला है प्रभु कैसे तो परीक्षा दे रहे हो, छोड़ो तो मरे और ले तो सुबह। मैं अपना दुपट्टा को बिछा दिया और दो जन के मतलब फिर का पत्थर का प्लस मतलब तो दुपट्टा में दो मान के लेके भाग जाएंगे कि तो सुने कहाँ ये लोग ना, ये पकड़ करके नहीं खाना पड़ेगा। मैं झूठा नहीं करूँगा, मंदिर के अंदर में कभी नहीं कर सकता, ये हमारा धर्म के विरुद्ध है। बस तुम्हारा धर्म तुम्हारे देश में, हमारा धर्म हमारे यहाँ खाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो लड़ाई चलने लगा, रो पांडा कितना लंबा चौड़ा तगड़ा दैत्या, अरे बाप रे बाप, उसके पैर के जामी में भी नहीं आ सकता नहीं, और वो पकड़ ले तो छुड़ाए कैसे, उनके लिए तम कीड़े पकड़ के समान। फिर भी मैंने बहुत अनुरोध किया, नहीं मान रहे, तो मैं बोला हम मंदिर के अंदर में प्रसाद नहीं, ये हमारा नियम नहीं, हमारा हमने लाल कपड़ा पहना, तिलक माला धारण करके हम ऐसे नहीं, आप कर सकते। और हमारे कितने भक्त लोग रह गए, उनको बिना खिलाए मैं कैसे खाऊं, अपने बच्चों को गुरुओं को खिला के तो खाना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते। तो वो मान गए, ठीक है, तो हम सब भोग वहीं भेजे, उनको बढ़िया भेजो, ये पहले जो, तो मैंने उसको तो बांध लिया, दोनों भक्त लोग थे वो भी अपने दुपट्टा बिछा दिए, सबने बांध के और उनके सर में दे दी, और वो लोग रात के 12-1 बजे जितना भोग प्रसाद सवेरे लेके, तो इधर हम लोग कथा कीर्तन 2 दिन करते थे और रात को सब सो गए। इसे मुझे क्या करें, तो मैंने बोला भाई जा गाड़ी में करके प्रसाद को बांटे हो, बांटने गया तो क्या बोलते हैं जागा धोके, तब वो लोग अपने प्रसाद रखते हैं। तो जहाँ व्रत की स्वाभाविक प्रीति है ऊपर, सब अपने आप उसमें सराबोर हो जाते हैं, ऊपर किसी प्रकार के दीधा बोध नहीं रहता, अर्थात कोई किसी प्रकार लेन देन और उसको नहीं रहता। महाप्रभु जी ने व्रत के अंदर में जो स्वाभाविक ब्रजवासियों को प्रेम प्रीति है, वो महाप्रभु ये प्रसन्न रथ यात्रा प्रसन्न में महाप्रभु ने सबको, और फिर एक साथ महाप्रभु देखते कैसा आचरणशील हुआ, उसका परिचय कैसे होता, जब आते जगन्नाथ के लिए कितना सुंदर सुंदर उपहार ले आते, कितने महाप्रभु के लिए ले आते, और महाप्रभु को निमंत्रण तो करेंगे, तो 8 जने 10 जने 20 जने मिल करके निमंत्रण देते। महाप्रभु 4 महीना कभी 5 महीना होता, सब दिन महाप्रभु पूछा दे, शाक पत्र परतून बच्चा लड़की, आश्चर्य वाला नहीं, कोई ऐसे पूरी पकवान, रसगुल्ला, छाना पोड़ा, खीरी, ये सब जगन्नाथ का व्रत तो आता ही, और स्वाभाविक साथ चटनी, नींबू, अदरक, दही। एक दिन मुकुंद दत्त ने निमंत्रण दिया महाप्रभु, इतना प्रसाद, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट, भक्त लोग प्रसाद पाते पाते यह तो हो गया, छोड़ नहीं पा रहे। दूसरे दिन उनके पुत्र रघुनंदन ने निमंत्रण दिया, तो रघुनंदन के निमंत्रण भी महाप्रभु जी बैठे प्रसाद ने, तो देखा नींबू है, अदरक है, नीम का पत्ता भुना हुआ है, नीम पत्ता की चटनी है, दही है, और साग है, विभिन्न तरह की। महाप्रभु इतना खुश हुए, बोले देखो ये है ब्रजवासी, स्वाभाविक प्रेम है, देखा हुआ नहीं है कि कोई आया तो हम उनको छप्पन को बढ़िया से बड़ा खिला रहा है नाम कमाने की प्रतिष्ठा के लिए, किंतु स्वाभाविक प्रीति नहीं है, वो सुखता नहीं है, उड़ीसा में तो संतुलन सुखता को स्वाभाविक। महाप्रभु इतना खुश हुए रघुनंदन के प्रति, तब पूछा मुकुंद दत्त को, मुकुंद रघुनंदन तुम्हारे बाप है या तुम रघुनंदन के बाप हो?
तो रघुनंदन तो कहते हैं रघुनंदन मेरे बाप है। तो कैसे? बोले कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म है जहाँ होते मेरे मेरे बेटा मैं नहीं कर सकता, उससे मेरे को भक्ति मिली, मदन व्रत भक्ति मिली, वो मेरा पिता है। तो रघुनंदन स्वाभाविक प्रेम। इसे इस ब्रज प्रेम की कथा महाप्रभु के बिना, भक्तों के बिना और कहीं मिलेगा नहीं, हुड़दंगा मिलेगा, किंतु ब्रज कथा नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें रमना है, इसमें अपने को सामूहिक समर्पण करना है, क्योंकि हमारा जो कुछ है आंतरिकता सब ब्रज में ही है। तब तो अब आगे सुनिए इस तत्व रहस्य मन गुरुवर्गों ने इस प्रकार प्रकाशन किया है। वो भूमि जब हमने मार्जन के बाद सब बगान में बैठ जाते, सब महाराज को उसमें तो हमारे गुरु महाराज जनार्दन महाराज ने उसमें संत महाराज और ओल्डर महाराज उसमें भगत थे, भगत माधव महाराज, जितने प्रभुपाद के शिष्यगण सब बैठे कीर्तन उस धूल में रोक खा रहे हैं, और इसके बाद में बैठते हैं और कथा रहस्य को वर्णन करते हैं। और जब निकलेंगे तब सारा दिन गुंडीजा मंदिर मार्जन किया, भोगे हैं, तो एक भक्त वो गुंडीजा ऋषि मंदिर में पास ऋषि मंदिर पर खीर भोग लगा, केवल खीर। सब भक्तों को कुल्हड़ पकड़वा देते हैं, बस वो ऋषि मंदिर का खीर खाया। इसलिए हमारा भक्ति विघ्न विनाश है। हमारा भक्ति जो ब्रज भक्ति का रस मिला है वो कोई नष्ट नहीं है, कोई रूप से नहीं ले जाए। वहां से देर अपना प्रयास शुरू कर, दूसरे दिन देवता के प्रसन्न व्रत के आगे सब मिलकर के नृत्य करते थे, एक साथ मिलकर घूमने आते थे। वो सब जो रहस्य विचार है और जो कथाएं हैं वो भिन्न है। ऐसे हमारे गुरुवर्ग ये आजकल के सुपर होगा नाच गान में कुछ रखा नहीं, यदि कथा रस नहीं है, ब्रज के संबंधित नहीं है, तो कुछ लाभ नहीं है। तो कल सुनेंगे आप बहुत देर में और प्रमाण